Good evening, everybody. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team. I'm sure all of you must be keeping good health. Overactive bladder, or OAB, is a frequent and sudden urge to urinate that may be difficult to control. The condition is common and distressing and may have a large impact on the quality of life. In this month of World Continence Week, let's unite to raise awareness about incontinence related issues and its impact in the life of people living with it. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of OAB, today we have with us renowned Dr. Nikhar Jain. Dr. Nikhar Jain is Senior Consultant Urologist, Andrologist, and Transplant Surgeon from Samda Superspeciality Hospital, Rajnandgaon. Dr. Nikhar Jain is having rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. Welcome and a very warm good evening to you, Dr. Nikhar Jain. Doctor, to start with, as we are celebrating World Continence Week, first of all, we would like to know what is World Continence Week? ये क्या है? Basically, World Continence Week is celebrated by International Continence Society to create awareness among the viewers and general public about overactive bladder and incontinence related issues. And by creating awareness, it helps in their treatment and it also helps in making them more confident in their lives. So it is the last of June, from 18th of June to 24th of June this month. Okay. So it was all about World Continence Week, and as in this session, we are going to discuss about OAB, overactive bladder. We would also like to know about what is overactive bladder. Overactive bladder is basically your bladder is getting overactive. Normally, the bladder contracts when it is full of urine and patient is having voluntarily going to urine. But overactive bladder, there is frequent sudden urge to void. The bladder is contracting involuntarily, and the number of times it is contracting is also increased in these patients. Okay. So if I talk about the major symptoms, कि वो क्या लक्षण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि OAB हो सकता है, तो वो क्या होंगे? बेसिकली जो पेशेंट रहते हैं उनको सडन अर्ज आता है पेशाब करने के लिए, तो वो पेशाब और कई बार इसी दौरान पैंट में या अपने कपड़ों में बाथरूम कर देते हैं और कपड़े गीले कर लेते हैं। उनका जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स है एक दिन में वो भी काफी बढ़ जाता है पेशाब जाने के लिए। कई बार पेशेंट्स बाथरूम करके आते हैं, यूरिन करके आते हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता रहता है कि यूरिन फिर से आ गया है। तो 1 घंटे में कई लोग 5 बार 7 बार ऐसे भी पेशेंट्स देखे हमने जो इतना फ्रीक्वेंट यूरिन पास करते हैं। Doctor, what are the probable causes of overactive bladder? क्या वजह है जिसके चलते OAB हो सकता है? Overactive bladder बेसिकली मेल पेशेंट में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ज्यादा कॉमन है। उसका मुख्य कारण मोस्टली प्रोस्टेट है। उन पेशेंट्स में ओवर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स में ओवर एक्टिविटी के कई सारे कारण हो सकते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं या हिस्टेक्टमीज या बच्चेदानी में और कोई प्रॉब्लम रह सकती है। ब्लैडर वो बेसिकली दिमाग में जो भी पैथोलॉजी है उसके कारण उनका ब्लैडर बार-बार एक्टिवेट होता रहता है। तो फीमेल्स में और मेल्स में अलग-अलग वजह हो सकती हैं, कॉजेस हो सकते हैं। क्या दोनों में इक्वली कॉमन है या मेल या फीमेल में से किसी एक को ज्यादा रिस्क पे वो होते हैं OAB के लिए? अगर यंग पेशेंट से बात करें तो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन रहता है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में, और ओल्ड पेशेंट्स में लगभग बराबर इंसिडेंस रहता है ओवर एक्टिविटी का। Okay. And what are the treatment options available for overactive bladder? ट्रीटमेंट में बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से करने पड़ते हैं, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस में मुख्य रहता है कि कई बार प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कई कॉफी ज्यादा पी रहे हैं पेशेंट्स। एग्जाम्पल के लिए कई लोग ताला खोल रहे हैं, चाबी घुमा रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है कि उसके कारण उनको एकदम सडन अर्ज आ जाए। तो वो ट्रिगर पहले पता करके उस ट्रिगर को बंद करना पड़ेगा
कॉफी इंटेक, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब चीजों को कम करना पड़ेगा, ज्यादा मीठा ना खाएं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस में आते हैं। बाकी फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास दवाइयां रहती है जो ब्लैडर को रिलैक्स कर देती है ना। और तीसरा ये है कि जो जैसे कि किसी को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ओवर एक्टिविटी हो रही है, तो उसको स्पाइन का ट्रीटमेंट हो या सर्जरी हो। दूसरा प्रोस्टेट के कारण हो सकता है, तो प्रोस्टेट की फिर सर्जरी। ऐसे अलग अलग कॉजेस के हिसाब से फिर उनको अपन सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। ओके, तो क्या कोई ऐसा भी डेटा है जो ये बताता हो कि यंग लोगों में ज्यादा होता है या एक सर्टेन एज के बाद ओएबी की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, ऐसी कोई बात है? ओएबी की प्रॉब्लम बेसिकली मेल्स में तो ओल्ड एज में ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। फीमेल्स में हर एज ग्रुप में ओएबी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्पेशली प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। यूरिन में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन फीमेल्स को कॉमनली होते रहते हैं, इसके कारण ओएबी का सिम्टम्स बहुत सारी फीमेल्स को आता रहता है। ओके, और अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ के, am I audible? Now you're audible. I think there was some network glitch. Yes, please go on. मैं कह रहा था कि जैसे ही पेशेंट्स को लगता है कि उनको ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, सबसे पहले एक यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। प्रॉब्लम शेयर करने के बाद जो भी यूरोलॉजिस्ट होंगे वो एसेस करके आपको कुछ टेस्ट कराएंगे। उसमें पहला एक ब्लैडर डायरी होता है। ब्लैडर डायरी में आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके, मिनिमम 2 दिन का रिकॉर्ड, बेटर रहता है 5 दिन का रिकॉर्ड, कि आपको कितने बार सिम्टम्स आ रहे हैं, कब सिम्टम्स आ रहे हैं, और आप बाथरूम तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, कपड़े गीले तो नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजों का डेटा एक निकल के आता है। उसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन के कुछ टेस्ट होते हैं, और एक अल्ट्रासोनोग्राफी और एक किडनी का फंक्शन टेस्ट। इतनी चीजें कराने के बाद, एक जनरल असेसमेंट के बाद, एक यूडीएस की भी एक वो यूजुअली यूरोलॉजिस्ट कराते हैं चेक करने के लिए कि क्या कारण है। ओके, तो अगर सिम्टम्स हैं जो कि डॉक्टर ने बताया, जो मेजर सिम्टम्स हैं ओएबी के, तो डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल गो एंड विजिट योर यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, वी ऑफन से दैट प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ओएबी को क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या ये कभी होना या रिस्क हम इसका कम कर सके, इसके भी कुछ उपाय हैं? यस, कम करने के कुछ उपाय हैं। स्पेशली ओल्ड एज मेल्स में प्रोस्टेट अगर आपको शुरू में लग रहा है, पेशाब का फ्लो कम हो रहा है, तो बेटर है ट्रीटमेंट उसी समय स्टार्ट कर दिया जाए। प्रोस्टेट का तो ओवर एक्टिविटी वाला पार्ट शायद ना आए पेशेंट को। दूसरा, फीमेल्स में यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशंस लिए जाए। इससे ओवर एक्टिविटी के सिम्टम्स अपने आप कम हो जाएंगे धीरे से। और तो जैसे ये प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं डॉक्टर? किसी पेशेंट को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो फिर प्रोस्टेट की मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा। और यूरिन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है फीमेल्स को बार बार, तो पहला तो हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, जो अलग अलग मार्केट में लिक्विड्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं वो। राइट, आपने ये भी डायबिटिक कहा कि पेशेंट्स, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो शुगर कंट्रोल में रखें अपना। बिल्कुल। और what should patient do to reduce symptoms of OAB? Is there a way to reduce symptoms of OAB? लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे पहला है ट्रिगर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है, ट्रिगर फैक्टर्स को प्रिवेंट करना है। दूसरा, आपकी जो डाइट है, डाइट से भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा मिर्ची खाना या बहुत आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कॉफी, चाय, ये चीजों को अवॉइड करना। तीसरा, एक पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, उससे भी आप ब्लैडर में काफी अच्छा कंट्रोल ला सकते हैं। तो अवेलेबल, उसमें आप सर्च करके उसको सीख सकते हैं।
बिल्कुल। तो पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के एक्सरसाइजेस हैं, उन्हें हम कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ प्रिवेंशंस, हेल्दी लाइफस्टाइल जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर, इफ अ पेशेंट इज ऑलरेडी डायबिटिक, आई मीन ही नोज दैट ही इज डायबिटिक, but he wants to prevent having OAB now, what can he or she do? जैसे डायबिटीज प्रोग्रेस करेगा, जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, स्पेशली जो ब्लैडर की जो छोटी छोटी नर्व्स और आर्टरीज और वेसल्स रहती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू शुगर। तो वो अगर शुगर कंट्रोल अच्छा रहेगा तो वो डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। हम्म। यूरिन भी जब यूरिन भी बहुत देर तक कई पेशेंट्स रोक के रखते हैं, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। 2.5 से 3 घंटे में पेशेंट को यूरिन चले जाना चाहिए। कई बार बहुत देर तक यूरिन रोकने के बाद राइट। और जब कोई पेशेंट ओएबी के सिम्टम्स लेकर आपके पास आते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें क्या बोलते हैं? इनिशियल जो डायग्नोसिस होता है, उससे पहले क्या चीजें कंफर्म की जाती है? इनिशियल डायग्नोसिस के पहले पेशेंट का एज, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। दूसरा, प्रॉब्लम कितने दिनों से है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है क्या, उनको स्टोन प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये सारी, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, पैरों में झुंझुनाहट तो नहीं रहती, चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं होती है। और एक लास्ट चीज उसमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रहती है। अगर पेशेंट को ब्लैडर के साथ बावल के भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो एक चीज तो यही है कि वो दोनों प्रॉब्लम लिंक रहते हैं, तो न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम का रिस्क ज्यादा रहता है ऐसे पेशेंट्स में। और दूसरा, कॉन्स्टिपेशन को जैसे ट्रीट करेंगे तो बहुत सारे जो ब्लैडर के प्रॉब्लम ठीक है। Okay. As you have very rightly said, doctor, that pregnant women or postpartum, they are more prone of having OAP. So in case a woman is pregnant or she has just delivered a baby, what are the things that they can keep in mind to avoid OAP? बेसिकली वही यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, वो एक मेजर कॉज रहता है ओएबी का। अदरवाइज बहुत देर तक यूरिन रोक के नहीं रखेंगे, अदरवाइज सिम्टम्स कई बार प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जो ट्रिगर फैक्टर्स है, बहुत मीठा, मिर्ची, वो सब अवॉइड करके। फिजिकल एक्सरसाइज, स्विमिंग, जिमिंग, इनसे भी फायदा होता है, बिकॉज अगेन दे आर लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली, फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, जिमिंग, ये सारे बेसिकली आपके पेल्विक फ्लोर को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, इनसे आदमी का दिमाग भी थोड़ा सा व्यस्त रहता है, एक सेंस ऑफ एंजाइटी जो रहती है वो कम हो जाती है बॉडी में। इससे भी कई लोगों को बहुत फायदा। राइट। क्या ओएबी की प्रॉब्लम रात में ज्यादा परेशान करती है, वर्सन हो सकती है, बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट दैट प्री ऑक्यूपाइड और हम थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं? यस डेफिनेटली, ओएबी के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को बॉदरसम जो रहता है रात में ज्यादा रहता है। एक तो उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, नींद से उठ के बार बार उनको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। रात में लाइटें भी बंद रहती है, कई बार पेशेंट्स बाथरूम जाते समय गिर भी जाते हैं, फ्रैक्चर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स रात के लिए ज्यादा कॉमन है। चौथा, रात में यूरिन प्रोडक्शन जो रहता है वो ज्यादा रहता है। पैरों में सूजन है तो रात में थोड़ा यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उनको और फ्रीक्वेंटली यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। जैसा कि डॉक्टर आपने बताया कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ओएबी के लिए। तो ऐसे में जिनको किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और दी वुमेन्स हु आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, उनको क्या पहले ही एक बार जाके यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? इसकी जरूरत होती है? नहीं, सिम्टम्स आने के पहले यूरोलॉजिस्ट को दिखाने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि आप होमली मेजर्स जो है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उन्हीं को आप करिए। आपको लग रहा है कि हाँ आपको सिम्टम्स अब आ रहे हैं, फिर आप एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। ओके। ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो हम सबसे पहले पानी से उसको एसोसिएट करते हैं, मोर ओवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट वी आर टेकिंग इन। तो जिनको ओएबी के सिम्टम्स है, ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स है, क्या कई बार वो पानी कम पी लेते हैं कि अब मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, ये सिम्टम्स ना हो, बार बार यूरिनेशन का अर्ज ना हो, स्लो डाउन देयर लिक्विड इनटेक?
बस मुझे लगता है रिवर्स है, अगर किसी को प्रॉब्लम रहता है ना तो यूजुअली डॉक्टर्स उनको बता देते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन है और आप पानी ज्यादा पीजिए, 5 लीटर 6 लीटर पानी पीजिए। मुझे लगता है वो अवॉइड करना चाहिए। So avoid taking very less quantity of fluid. I think 2.5 to 3 liters of fluid is sufficient. Okay. We'll also take some of our viewers' question who have, asked their question. Alisha Madhav is here asking, what side effects might the medication cause and what can I do to help manage OAB? Side effect of the medication is basically dryness. It will be dry mouth, constant urge to drink water. Right. So it's important to keep yourself hydrated. And Alisa is also asking that what can I do to help manage OAB? Basically, lifestyle changes. I have already told about the food products which you need to avoid. Second, will increase the roughage in the food, so don't have constipation. Third, exercise to gain proper control of your bladder. And do not hold urine for very long. Avoid these things. Avoid dehydration. Avoid excessive fluid intake. Right. ओके कई बार ये होता है ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमको लगता है बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी बैड, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। गजेंद्र कौशिक इज हियर, व्यूअर आस्किंग हाउ लॉन्ग ओएबी मेडिकेशन शुड कंटिन्यू? Basically, there is no timeline. Some patients have OAB for life. They might have to consider it for life. Otherwise, when a patient is feeling better, we can start the medication for at least 3 months and then wait and watch and see if there is some precipitating factor like a urinary tract infection. Then as soon as the infection is treated in 3 or 4 days, then the patient can stop the medication apart from the symptoms. If a patient is asymptomatic, he can stop the medicines. Okay, fine. Adi Jain is asking, is asking about UTI. What's the different species of bacteria that can cause UTI, and does the severity of UTI depends on the species of bacteria that infect the patient? Most commonly, the most common infection will be E. coli. There are various species of E. coli basically targeting the bladder mucosa. There may be resistance among individual species, but I don't think individual species define the severity of the disease. Patient may have one species and have severe disease. Same species in other patient may have mild disease. Right. So it depends. It depends on individual, and it may vary from individual to individual. Sanket Raj is here asking, sir, does diabetes patients are more prone to OAB? Though we have already discussed it, doctor, लेकिन हो सकता है संकेत ने थोड़ी देर बाद join किया हो, तो please इनके question का answer दीजिएगा. Yes, diabetic patients, especially long-term diabetes, more than 10 years, are prone to OAB, especially because of their bladder mucosa and the nerves and the vessels, blood vessels supplying to the bladder are injured. Okay. Abhishek Mishra is asking, are there foods or beverages I should avoid to keep from making my OAB worse? Is what Abhishek Mishra is asking. And we'll have Dr. Nikhar Jain back with us soon. And till then, let me just remind you all that today we are talking about overactive bladder, OAB. The symptoms may vary from, a lot of urge to urinate, and in an hour, patients may urinate for like 6 or 7 times. There can be n number of causes, and yes, treatment is available. So these Am I audible? Yes, doctor, you're absolutely audible. And the question Abhishek Mishra is asking that I want to put in front of you is, are there foods or beverages I should avoid to keep from making my OAB worse? Yes, artificial sweeteners, coffee, tea, and carbonated beverages you should avoid.
And if you are also having symptoms of burning micturition or dysuria or discomfort, Doctor, you were audible, but you were not visible. And now I think we have lost you for again for some time. So hoping that Dr. Nikhar Jain will join soon. So yeah, today we are talking about World Continence Week and also about overactive bladder, that's OAB, and also trying to know the major symptoms of OAB, what are the probable causes of OAB, and what all treatment options are available for OAB. Viewers are also connecting live with us and asking questions, which we are trying to get an answer from Dr. Nikhar Jain. And the bottom line from whatever discussions we had so far is that in case you are experiencing those symptoms of OAB, please go and consult your urologist. It advances with age. If a person is diabetic, then of course the chances, or he is more prone to OAB. If a lady is pregnant or even post-pregnancy, ladies are prone to OAB. Again, with UTI or kidney functioning issues, OAB risk increases in person. And of course, the cause may differ from individual to individual. So we are waiting for Dr. Nikhar Jain to join us back. Some network glitch, it seems. And yes, about I think doctor is back with us. poor internet connection. I can imagine that. That's okay, doctor. Yes, we were talking about the beverages and foods that should be avoided. Yeah, carbonated beverages should be avoided. Artificial sweeteners, very sweet dish you should avoid. Coffee, tea you should avoid. These are the food that are precipitating the OAB. Also, if you are having symptoms of dysuria or burning micturition or difficulty in urination, then you should also avoid chili powder. Okay, right. Sanjay Pandey is asking, my father is going to urination at night more than 2 times. Can it be OAB? Yeah, it can be OAB, but see, if the patient is having a frequent urination at night, there can be other causes also. Can you ask him whether his father is having pedal edema, swelling in the lower limb? Sanjay, if you're still live with us, please answer us whether your father have swelling in his leg, right, doctor? Yeah. Yeah. Okay, we'll wait for his reply. Till then, we can pick few more questions from our viewers. Saket Manohar is here asking, which condition is the most common cause of bladder overactivity? Most common will be urinary tract infection. Can you please repeat it, doctor? Urinary tract infections, UTI. UTI is the more common And cause. in males, most common will be the prostate. Okay. Madhuri Soni is asking, is OAB genetic? It's very difficult to point out the genetic cause for OAB. Most common will be these causes which I've already told you. But is it likely that if a person is, suffering from OAB, then his or her, children will also have the same problem? Are there any risk factor? I don't think we should go there. Okay. Neurogenic problems can be genetic, like meningomyelocele is there. So these problems can cause OAB, otherwise don't need to. Okay. And you've also mentioned, doctor, that with UTI also the chances of having OAB increases, and especially in women, because in women the chances of getting UTI anyways is higher. So in case a person is suffering from UTI, shall he or she be more concerned about not getting OAB? No, UTI, basically OAB are the symptom complex of UTI only. So there is nothing to be concerned about OAB. Just the symptoms of OAB and UTI are same.
So when you Okay, get treatment for UTI, you will also get treatment for OAB, and you can stop treatment there itself. There is no fair need to get enough. extra treatment for OAB. Okay, fair enough. Chandrasekhar is here asking, does OAB affect men as well as women? Is it more common in women? Yeah, it is more common in women, but yes, men can also have OAB. There are multiple problems which are both seen both in women and men. Patient having low backache, sciatica, or any neurogenic problem can have OAB irrespective of the sex of the patient. Also, prostate is seen only in males and basically in old age, and this can cause OAB, overactivity in your bladder. Okay, so definitely, yeah, it can affect both men and women. We have Abhilasha Mishra with us asking, is OAB simply a part of aging? Pardon? Uh, Abhilasha is asking, is overactive bladder simply a part of aging? I don't think it's part of aging. Mhm. Basically, this is a symptom complex which can be due to some pathology that might be related to aging, like prostate is seen only in old age patient, but not every old age patient will have OAB. Okay. Now, Sanjay has replied and is saying that, yes, sir, there is some swelling. So if there is some swelling, then at night what happens is that swelling will reduce and convert into urine, and patient will have more than twice urination. So I think it's better to consult a urologist and check for prostate. Also tell him that the patient is having swelling, so he can test for nocturia as well. That will be nocturnal polyuria because of the swelling of the feet. Okay. Gitika Sharma is asking, how can a prostate problem contribute to OAB? Yes, prostate problem have basically two types of symptoms. The first symptom will be the voiding symptoms, patient having difficulty in voiding, intermittency in flow. The second part of the symptom complex is this OAB symptoms like patient having frequent urination, patient going to voiding before going to bathroom, patient not able to control the urine, patient may even have incontinence, patient may Right, have cells of incomplete evacuation of urine, so you will have frequent urge to void urine. right. Ishita is with us asking that can illness or bladder infection cause OAB? Yes, a urinary tract infection basically means bladder infection itself, more common in females, and it can cause OAB. Patient will have symptoms of burning micturition, frequent urge to void urine. Okay. Shivani Mishra is asking, can Kegel exercises help with OAB? Yeah, in few patients, Kegel exercises will help with OAB. We do not have any role in urinary tract infection per se or prostate problem, but there are different diseases which will like neurogenic problems in which the Kegel exercise will help in OAB symptoms. We don't Oh, use the word Kegel exercise, we use the word pelvic floor muscle training exercise. right. So it's to tighten your pelvic muscles as if you are lifting the marble, the way, I mean, that's the exercise. So Abhinav Datar is here asking, does menopause have a role in contributing to OAB? Menopause will cause vaginal dryness. It can cause urinary tract infection, increase the risk of urinary tract infection. There are also history of prolapse of uterus in these patients. So these things can contribute to OAB, not per se menopause. Okay. And doctor, how bad can OAB become, if left untreated, or if the treatment that the doctor has prescribed, the patient is not adhering to it, then how bad can it go? It can be very bad because patient will have sleepless nights, frequently going to the bathroom. Mhm. So daytime sleepiness, nighttime waking up. Right. Second will be all the social activities will be hampered. Patient will not go travel any far because of the search of the bathroom. So he will have to be at home itself. So it can be very mentally devastating for the patient, physically as well as mentally.
Right. So it's better to seek advice from a good urologist, a good doctor, in case you have these symptoms. We have Ravina Patil asking, how soon should my symptoms improve? I think she was talking about after starting the treatment. How soon should I get relief? If it is a pure or OAB that is without any cause, like there is no urinary tract infection or any other precipitating disease, then immediately you will find relief with the medications. Okay. Saloni Mehra is here asking, can over-the-counter medications contribute to my OAB? No, I don't think any over-the-counter medication will cause OAB. Mhm. So yeah, there's no probable, theory to support that it can cause OAP. Doctor, now you have said that It's important to have a better lifestyle. It's important to that you exercise, you sweat it out, do a lot of pelvic floor muscle if you have these symptoms, etc. Now, to our viewers, what would you like to tell them? What should they keep an eye on, keep a check on, and what should they do? My viewers, I like to say keep exercising, drink adequate fluids, do not overdo it. And third thing is not every OAB is urinary tract infection. So if patient is going frequently to urine, it's not necessary that he or she is having urinary tract infection. So you get checked for other causes as well. Right, that's important. Sonali Verma is here asking, are there any special instructions I should follow when using my treatment, when going through my treatment? There are no special instructions. Just keep yourself busy. See for the trigger factors. Treat the cause for the OAB. That's it. Okay. Adi Jan is asking, I experience chronic constipation. What impact could this have on my OAB? Could the constipation contribute to my OAB? Yes, constipation will have fecal loading in your rectum and it can press the bladder and cause overactive bladder symptoms. So Right. treating So, the constipation is an important part of the OAB treatment. mhm. When you see your patients, doctor, because many a times patients won't go or check with the doctor as soon as they see the symptoms, or there are things that they do which make the condition worse. आपके पास भी जब patients आते हैं तो आपको लगता है कि ये गलतियां नहीं की होती तो treatment जल्दी हो जाता, जल्दी आराम मिल जाता? Yes, definitely. Especially old age patients who are neglected. They travel from far. Basically, they are not uh, very aware of the symptoms. They are not aware of the disease itself. So I think Right. those patients especially need special care while coming to the doctor. Right, right. And for the awareness part, we are taking care of it by conducting such sessions. We have Raja Patil asking what other treatments or products that I haven't already tried might help me. I think he has already tried a lot of things. So now he's asking what other treatments or products are there that I can help use. Doctor, are you there? Yes, doctor. Please pardon, I am not getting his question. Okay, I think he has already tried a lot of treatments and products, and now Raja Patil is asking what other treatments or products are there that I can use to help my OAB. But he will have to elaborate what treatment and what product and what disease is having so that I can tell that you can use those products now. Exactly. And with such questions, I think it's more important to consult your urologist and have trust on your doctor because, anyways, they'll suggest the best treatment, as per your condition or as per the causes that's responsible for your OAB. So, doctor, as we are, towards the conclusion of this session, what are the important things that you would like to convey to our viewers? First thing is, I think everybody should create awareness, especially among the family members, relatives,
These are the symptoms of OAB. You have all listened to the talk, and I think you are well aware of the symptoms and what disease can cause those symptoms. Second thing is, do not take anything without doctor's prescription. Do not go for over-the-counter treatment. And third thing is, too much of fluids, too much of liquid won't help with the OAB symptoms per se. That was very crisp and very clear. Thank you so very much, Dr. Nikhar Jain, for your valuable time, sir. And it has been quite an informative session for our viewers. We really look forward for many more such sessions in coming times. Thank you so very much. Thank you, the Bladder Wellness team. Thank you. And we would also like to thank our viewers for an excellent participation, and for more information on how to diagnose, manage, and treat overactive bladder. So for more information and updates on the overactive bladder, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube and Twitter and Insta. Thank you. Good day to all of you. Goodbye.